these two results, this is denoted by f, capital F of z. So definitely this is denoted by f of hz. Now in the second case, z transform of a power n fn. Summation n equal to 0 to infinity a power n fn z power minus n. See, n equal to 0 to infinity a by z और n fn. इसको ओपन करो. See, our result, this is z transform of right here. This one, z transform of sequence fn. This is summation n equal to 0 to infinity this fn and z power minus n. So what we do here, this is change this one, write the negative term power, यानी कि a goes to the denominator and this is numerator power minus n, this is. So when you compare these two, fn is this one, z power minus n, so this is f of z by k. So now we solve these two examples. Determine the following. Number 1, 1 upon n plus p factorial, where p equal to 1, 2, etc. Second one, अच्छा एक एक करके चलते हैं. Solution. Determine the following. Determine the z transform of following sequence. Okay. So how can you find the z transform of this sequence? n factorial क्या है? n plus p. Anyone? How can we find? Just what we do, we use these two results. One results from these two. And we already proved in the previous class. So now we can use this first result. How can you find? ठीक है, नहीं फर्स्ट नहीं, fn के है ना, तो ये रिजल्ट यूज करेंगे. ठीक है. So suppose fn is, let's assume that what we do, just you find the z transform of this. So let fn is 1 upon factorial n. ठीक है. Now find the z transform of this one. Z transform of fn, यानी कि z transform of factorial n.
This is what? What is the Z transform of 1 by factorial n? Sir, e to the power 1 by z. ये देखो, Z transform of this one. Now in this one substitute a equal to 1. क्या बोल रहे थे? e raised to the power 1 by z. 1 by z. correct. In this one a equal to 1. So this is e raised to power z. This is the Z transform of now in this one कहाँ गया? A second result in our problem, that is the इसको k कर देते हैं तो सीधे से, चलो ठीक है, ये सीधे सीधे इसी को k कर लेते हैं. सर e पावर 1 by z होगा. हाँ करेक्ट. एक मिनट में बस आते हैं. 1 by n प्लस के, ठीक है, p कुछ भी ले सकते थे पर ऐसे ही ले लिया. 1 by n प्लस के फैक्टोरियल k इक्वल टू 1. हाँ ऐसा ही बोला है. a by z है ना, e के पावर a by z, तो a is 1, so this is 1 by z. करेक्ट, थैंक यू. ठीक. So what we do this, we use this result. कहाँ गया? ये z ट्रांसफॉर्म ऑफ fn प्लस के z पावर के, दिस इज, ठीक है. सो z ट्रांसफॉर्म ऑफ fn प्लस के, दिस इज z transform of fn plus k is what? This is 1 by factorial of n plus k. 1 by factorial of n plus k. So now just we use the result. क्या है? z power k fz. So z के पावर k कॉमन, ठीक है. fz मीन्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई फैक्टोरियल n, ठीक है, माइनस समेसन n इक्वल टू 0 टू k माइनस 1, और आगे fn z पावर माइनस n है, n इक्वल टू fn z पावर माइनस n, fn z पावर माइनस n. सो दिस इज, ठीक है. नाउ simplify this one. Z transform of 1 by factorial n, this is e power 1 by z minus summation n equal to 0 to 0 to k minus 1 fn z power minus n. This is, ठीक है. So this is the Z transform of n plus k. So this is, हम लोग क्या करना था कि डिटरमाइन द फॉलोइंग, डिटरमाइन द Z ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस. ये हो गया. फर्स्ट वन इज द, this is complete.
एक्चुअली ये प्रॉब्लम में थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया. दिस इज फॉर पी के इक्वल टू 1 2 3 ओनली. दिस इज नॉट इनफिनाइट. कितने तक निकालते रहेंगे? 1 2 3 100 200 1000. So in this problem determine Z transform of this and also for the k equal to 1 2 3. So this is very easy. In after getting the result, now what we do, substitute k equal to 1, k equal to 2 and k equal to 3. So for k equal to 1, for k equal to 1 you can find. So simply substitute here k equal to 1. हाँ बताओ क्या मिलेगा? for k equal to 1, जेड ये p नहीं है k. for k equal to 1 Z transform of f n plus 1. कनेक्शन है ना? हेलो, हाँ है, ठीक ठीक. Z transform of fn plus 1. So k equal to 1. So this is z के power 1. E के power this is 1 minus n equal to 0 and k equal to 1. So 1 minus 0. So this is cancelled. So there is the only one term. N equal to 0. Sorry. N equal to 0 first term. Z के power minus n. So 0 to this one. तो ये सिंपल एक ही टर्म मिलेगा. दिस इज द एफ नॉट. नाउ फॉर k इक्वल टू 2, Z ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन प्लस 2, Z के पावर 2. नेक्स्ट वन इज द e पावर आ गया 1 by z. So this is in this one also same. ये सही है ना? ये z यहाँ क्यों हटा दिया? हेलो, तो वहाँ भी आएगा. यस सर, वहाँ पर भी 1 by z होगा. e पावर 1 by z माइनस एफ नॉट. बस सही है. यहाँ पे k इक्वल टू 1, सॉरी k इक्वल टू 2, e पावर 1 by z. ये तो सब में वही रहेगा. ये कंटिन्यूअस सब में एक ही रहेगा. ये 1 2 3 चेंज होता जाएगा. और ये पोजीशन जैसे फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, थर्ड इस तरह बढ़ता जाएगा. तो k इक्वल टू 2. सो 2 माइनस 1 यानी कि 1, यानी कि समेशन n इक्वल टू 0 to 1 fn z पावर माइनस n. ठीक है. तो n इक्वल टू 0, यहाँ 0 रखो तो f0 z के पावर माइनस 0 यानी कि माइनस f0 माइनस n इक्वल टू 1. सो f1 एंड z के पावर माइनस 1. Similarly, you can find the for k equal to 3. ठीक है, ये कर लोगे? Yes sir. Okay. So now find Z transform of second one. Cos n plus 1 थीटा. एक्चुअली मैंने अपने उसमें लिख रखा है 1 7 5 एग्जाम्पल, और मुझे इसका आंसर नहीं लिखा, इसलिए मुझे थोड़ा सा कभी कभी डाउट है. डिटरमाइन द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट 1 by n plus p फैक्टोरियल
cos n plus 1 theta sin n plus 1 theta e raised to power n plus 2 e raised to power n minus 2 और ये साइड में 2 रिजल्ट बस, ठीक है। सो cos n plus 1 theta यानी कि we have find to z transform of this one. So as like the previous problem, in this one also assume fn is what? Cos theta. Hello? Cos and theta. हाँ, cos and theta, correct. Let fn is cos n theta plus ठीक है, correct cos n theta, ठीक है। So now find the z transform of first fn. After finding this one, now use the result second as like the previous case, ठीक है। ये माइनस वाला एक करना चाहिए था हम लोग को, ठीक है। चलो, so z transform of fn, this is z transform of cos n theta। तो ये मुझे लग रहा है कि हम लोग फाइंड किए हैं, इसी में था क्या? हाँ सर, z into z minus cos theta by z square minus 2z cos theta plus 1. एक मिनट बोलते जाओ, मैं लिखता हूँ। हाँ बोलो सर, z into z minus cos theta ठीक है, by z square minus 2z cos theta 2z cos theta, ठीक है, plus 1 correct, ठीक है। Okay, so simply in this formula, in this one, ये substitute k equal to 1, so we can find z transform of fn plus 1 यानी कि cos n plus 1 theta, correct। So in that result, substitute, put k equal to 1 in result 2. So z transform of fn plus 1 and fn plus 1 यानी कि z transform of cos n plus 1 theta. This is z के पावर k यानी कि z के पावर 1. Now this is fz. So here write fz. So fz is z minus cos theta divided by z square minus 2z cos theta plus 1. So this is fz. Next one क्या था? यही तो है, हाँ, summation n equal to 0 to k minus 1 fn. So k equal to 1 का मतलब है ये fz minus f naught, ठीक है। So what is the f naught? और fn is, this is f naught. तो fn is this one, cos n theta. So f naught is cos 0 means 1. So simply write here 1. बस हो गया, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई इट। Similarly, you can find for the sin n plus 1 theta, sin n minus 1 theta, ठीक है, cos n minus 1 theta, तो इन सब के लिए फाइंड कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल
थर्ड में फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई के पावर n-2। So Z transform of e raised to power n-2 n-2। तो हमारा पहला वाला रिजल्ट है we use this one Z transform of fn minus k z के पावर माइनस k and fz। तो माइनस वाला तो बहुत ईजी है, ठीक है। So in this one Z trans, so write fn is e raised to power n। So Z transform of fn we have already find, अभी बताया था ना, नहीं क्या होगा, जेड बाई जेड माइनस ई। एक मिनट, जेड बाई, हाँ सही, जेड माइनस ई। सो दिस इज द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वन। नाउ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू पावर n-2, यानी कि ये एक्चुअली क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ fn-2, ये है ना। सो जेड के पावर माइनस के यानी कि -2 fz मीन्स दिस इज fz। सो जेड बाई जेड माइनस ई, ओके। तो ये कैंसिल हो गया, ये जेड नीचे चला जाएगा। Z transform of e raised to power alpha n cos बीटा n, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। How can you find this one? सर e टू द पावर n fn वाला प्रॉपर्टी। Yes, correct. We use these two, this result in starting we has, ये second one, f of this is what, so first we find for this one, we know that, means not know that, we have to find Z transform of fn. Now we can write f of z by a, f of az. This is what, f of z means the Z transform of fn. Now in this one replace z to az, replace z to z by a. So that's why first we calculate Z transform of fn. So cos beta n, okay, so fn is cos beta n. So therefore Z transform of fn, this is z माइनस क्या बोला था, cos बीटा बीटा एंड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 2z ना, 2z यस सर, cos बीटा प्लस 1 होगा माइनस 1, यस सर, प्लस 1। +1। So this is f of z, this is, ठीक है। तो अब हम लोग को उसमें क्या लेना है, यहीं पे लिख लेते हैं।
z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ नहीं, z ट्रांसफॉर्म ऑफ a पावर n fn। एक तो ये है, दिस इज f of az एंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ, एक उल्टा लिख दिया क्या, माइनस वाला ऊपर आएगा, प्लस वाला नीचे जाएगा, a पावर माइनस n fn, उल्टा कर दिया। ठीक है ना, एफ ऑफ जेड बाई ए, चेक कर लो तो ठीक है, एक पावर माइनस एन, ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं, ठीक, ठीक, अब थोड़ा सा इजी रहेगा यहाँ देखने में, ठीक है। सो सी z ट्रांसफॉर्म ऑफ fn, we have find this one, यानी कि this is f of z, ये हो गया। now compare these two results, तो हमें क्या करना है, ये रिजल्ट का यूज करना है, सेकेंड वन, ठीक है, z ट्रांसफॉर्म ऑफ a पावर n fn। so a पावर n is what, this is e raised to power alpha n। So when you compare, so what is a? A is e के power alpha. Okay, a is e raised to power alpha. Then we can write, if a power n, this is a e के power alpha n. So in this formula, just we replace a equal to e के power alpha. Replace a2 या a बाई e के पावर अल्फा, करेक्ट। सो नाउ z ट्रांसफॉर्म ऑफ e के पावर अल्फा n cos बीटा n, सो दिस इज f ऑफ, तो देखो हम लोग क्या लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना, एक मिनट, एफ ऑफ जेड बाई ए। सो पहले नंबर की जहाँ जेड है वहाँ पे क्या होगा, जेड बाई ए, एंड ए इज रिप्लेस बाई ई के पावर अल्फा। सो दिस इज जेड बाई ई के पावर अल्फा, जेड बाई ई के पावर अल्फा माइनस cos बीटा, एंड द डिनोमिनेटर जेड बाई ई के पावर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 जेड बाई ई के पावर अल्फा cos बीटा प्लस 1। देखो तो हेलो, यस सर, Yes, sir. ठीक है, क्लियर, हेलो, Yes, sir. Clear. ठीक है। सो वी कैन फाइंड इन दिस वे। सिमिलरली you can also find the z transform of e के power alpha n, and here sin beta n. So what we do, first you write fn, find the z transform of this fn, that is the fz, और यहाँ पे माइनस अगर है e raised to power माइनस अल्फा n, तो हम इस रिजल्ट को यूज कर लेंगे ऊपर वाले को, ठीक है, a के पावर e अल्फा, सो दिस इज निगेटिव, सो रिप्लेस z बाई ए जेड, यानी कि जहाँ जहाँ z है वहाँ पे e के पावर ये माइनस अल्फा इससे करना, और सपोज दिस इज द नेगेटिव साइड, तो नाउ यूज दिस वे, ये
this is 1. So we have find this one. Okay, अब क्या करें, ये तो ये एक्सरसाइज डिटरमाइन जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ following sequences. तो इसको ऐसे चेंज कर लेते हैं, e पावर अल्फा n साइन बीटा n सेकेंड e पावर माइनस अल्फा n साइन बीटा n. ठीक है, the next is differentiation of jet transform. We know that the jet transform of jet transform of the sequence Fn, that is denoted by alpha, and this exists in region not jet is greater than 1 by r. So now jet transform of n times Fn, this is minus jet d by dz of jet transform of sequence Fn. Here minus jet d by dz and jet transform of Fn means similarly as like this type of result we have proved in the case of Laplace transform. So I think when you generalize this one, तो ये हमारा -1 के पावर शायद n की निगेटिव है, चलो देखा जाएगा. This is so okay, which is also convergent, which is also convergent in the region not z is greater than 1 by. Now we are going to prove this one. We know that jet transform of Fn, this is summation n equal to 0 to infinity Fn jet or minus n. So expand this one, n equal to 0, substitute f0 plus n equal to 1 f1, n equal to 2, n equal to 3. Minus 3, 4, okay, etc. So what we do, differentiate both sides with respect to jet. Differentiate
differentiate both sides with respect to z. And also assume that term by term differentiation of infinite series allowed. So left side is, we can denote it by this is f of z. This is the z transform of fn. So now what we do here, we write f of z equal to this one. So now differentiating both sides with respect to z. So left side is d by dz capital F of z. This is equal to, now differentiate with respect to z. So differentiation of f naught is 0. This is minus 1 z के power minus 2 minus 1 f1 z के power minus 2. तो minus 1 क्यों लिखा, माइनस से सीधे लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस f1 this. Similarly next one is z के power minus 2, तो minus 2 f2 z के power minus 3. Okay, minus 2 f2 z के power minus 3. Next one is the minus 3 f3 z के power minus 4 minus 4 f4 z के power minus 5 minus and dot dot dot. So in the nth place minus n, this is fn z के power minus n plus 1 minus etc. Okay, so this is d by dz of fz. fz, this is. So now in this one take z power minus 1 and also negative sign form minus z के power क्या कॉमन ले लीजिए, minus 1. This will take the common. Now what we find, minus all of minus goes to outside, so this is f1 and z के power minus 2 goes to outside, so this is 1 by z. So write f1 by z. Yes, ठीक है, हम लोग माइनस ही लिख रहे हैं, z पावर minus 1 प्लस 2 times f2 z के power minus 2 प्लस 3 f3 z के power minus 3 प्लस 4 f4 z के power minus 4 प्लस n fn z के power minus dot 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 this. Okay, so minus this is 1 by z. Now see here, this is what, this is summation n equal to 0 to infinity and 1 2 3. This will start not n equal to 0 से कैसे start होगा,
if we write क्या कर सकते या we have two choice, either start from n equal to 1. If we write this is fn z power minus n, so anyone can you suggest if this is start from n equal to 0. Okay, if you write this is n fn z power minus n. Now see, suppose n equal to 0, if we write, so 0 into anything, this is the 0. First one is the 0. Okay, 0. Now second one, n equal to 1. So 1 f1 z ke power minus 1. Correct. N equal to 2. So 2 f2 z ke power minus 2. Okay, correct. And 3 f3 z power minus 3, 4 f4 and fn. Okay, everything is correct. So n equal to 0 to infinity n fn z power minus n. Now this is correct. So you know that z transform of fz, z transform of the sequence fn, that is denoted by fz. So when you compare to that definition, now we write minus 1 upon z. This is the correct notation. Minus से अच्छा ये minus 1 by z bracket. And this is z transform of what? Anyone? NFN. NFN, correct. NFN. This is तो गया. So therefore we see that कि z transform of NFN is, इसको इधर भेज दो. ये हमारा क्या है? F of z equal to this. So we write z transform of NFN. This is this one goes to the left side, so minus z and minus, no, that is wrong. In left side is not fz, left side is d by dz of fz. D by dz of fz. So remove this one. Right, this is d by dz of fz. Now this is okay. You see, z transform of NFN is minus z, and this is d by this is in bracket. This is the good practice to write this one, d by dz of fz. I think this is our statement. Z transform of NFN, that is the minus of z, d by dz, z transform of the sequence fn, that is denoted by fz. So now we have proved this one. So anyone, you can prove this is for n equal to 2. So this is for exercise. Number 1, find z transform of n square fn and z transform of, if you find n square, so this is not a matter of n cube n3, so just you find the generalization n power k fn. Okay, so this is 2
exercise for you. Find the Z transform of n square Fn and find the Z transform of n k power k Fn. So this too is the exercise. And we can find the simple problems on this one, Z transform of n Fn. How to find, just find, determine Z transform of. So on this one you can also find Z transform of n, Z transform of n square. So this is also exercise. Then determine Z transform of Fn. Number 2, you know that n this you know how to find, and Z transform of n square. So using this result, if you know that this is the Z transform of Fn, n. What is this one? Z transform of n. Suppose you don't remember this one and you want to find that way. So there is another way to find, just using this result. You know that एक मिनट, इसको हम बाद में देखते हैं, रुक जा. ठीक है, फर्स्ट वी सी दिस वन. ठीक है, you find Z transform of Fn. So we know that Z transform of 1. This is what? Z by Z minus 1. You know that this is the Z transform of this one. So Z transform of n, we can write Z transform of n into 1. See, n into 1, यानी कि n into Fn. This is Z transform of n into Fn. So minus Z, right here, minus Z d by dz, Z transform of 1, यानी कि this is Fz, Z by Z minus 1. So after differentiating and multiplying by minus Z, this result is the Z transform of n. Now this is exercise number 1. Find Z transform of n square. See, if you find the Z transform of Fn, that we can write n into n. So minus Z d by dz of this result. Suppose this is x, Z transform of n. So what you do, this is right, Z transform of n into n. So minus Z d by dz, and this is Z transform of this n, that is the x. You write here x. So therefore we can easily find Z transform of n square, and in this way we can also find Z transform of n cube. And third one, Z transform of n to the power 4. So these are the all are the exercises for you. Okay.
Okay. And one last example. This is the example. This is the last example of today's lecture. Determine Z transform of n a power n and Z transform of n square a power n. So just I am going to hint, and again this is the exercise. Okay, so see, again use the above formula. So what Z transform of a power n? Anyone? What is this one? Z transform of a power n? जल्दी बोलो. Hello? Z by Z minus A. Z by Z minus A. Correct. Z by Z minus a. So therefore, Z transform of n a power n, this is, and this is fz. So minus z and d by dz of fz. So write z by z minus a. So you find this one. Similarly, if you find this one, suppose this is the y. So next one is the z transform of n square a power n. So we can write z transform of n into n a power n. So therefore, we know the z transform of this one. So minus z d by dz of, and z transform of this is y. So we can find this one. ठीक है, चलो बस इतना अभी है. So any question, any query? Hello, कुछ पूछना है? No, sir. चलो ठीक है तब. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. welcome.